हेलो जी, हेलो पावर, हेलो परफॉर्मेंस, हेलो स्पीड। देखिए वो दिन चले गए व्हेन वी ओनली हैड टू से हेलो Hello, मोटो, क्योंकि Moto. आज जो फोन मैं आपको रिव्यू में दिखाने वाला हूं, मोटो एज 30 प्रो। It wants to greet you in very different ways, बड़े अलग अलग हेलो आपको बोलेगा। हेलो टू ऑल दीज नंबर्स एंड फीचर्स एंड स्पेक्स। आप देख रहे हैं बड़े 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 पावरफुल से नंबर्स और चीज़ें मेरे आसपास आ रही हैं। ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, ये सारे इनका एक्चुअली कुछ मतलब है। दीज आर ऑल स्पेक्स ऑफ द एज 30 प्रो। यू वांट टू नो मोर? लेट्स डाइव इनटू द अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द मोटो एज 30 प्रो। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बॉक्स इटसेल्फ। सिंपल क्लीन लुक है, जैसे मोटरोला हमेशा करता है। वेरी वेरी नाइस, रिफाइंड, प्रीमियम, इन योर फेस, कुछ गैरिश नहीं है, कुछ ओवर द टॉप नहीं है। इनसाइड द बॉक्स हम लोग अगर देखेंगे तो व्हाट डू वी गेट? एक पावर अडेप्टर है, एक चार्जिंग केबल है, द यूजुअल पेपर वर्क इज आउट देयर। तो अनबॉक्सिंग तो प्रीटी स्टैंडर्ड थी, लेकिन जो फोन मेरे हाथ में है इज रियली एक्साइटिंग। इन्होंने एक कवर भी साथ में दिया है, व्हिच वी विल पुट टू द साइड राइट नाउ। देखिए सामने ऑलमोस्ट ऑल स्क्रीन, नो बेजल। ऑलमोस्ट मैंने कहा, बेजल्स अराउंड द फ्रंट आर वेरी वेरी स्लिम। मोटरोला को ना एक छोटा सा अवार्ड देना चाहिए फॉर द डिजाइन ऑफ देयर फोन्स। विश्वास है इसमें कुछ खास है, इज व्हाट दे ऑलवेज पुट इनटू देयर फोन्स। मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ दिस फोन इज दैट ऑल द बटन्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज एब्सोल्युटली क्लीन। आपका हाथ जो है रेस्ट परफेक्टली वाइल होल्डिंग द फोन, और बटन कंट्रोल जो है थंब के साथ भी हो जाता है। दीज थिंग्स मैटर। एंड इफ यू लुक एट द साइड रेल्स ऑन द राइट साइड, यू कैन सी हाउ इट कर्व्स अराउंड द बटन्स, यानी कि बटन्स स्टैंड आउट इनफ, कर्व जो है पीछे चला जाता है। स्मॉल डिटेल, बट दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली गेट यू अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। कैमरा बम्प भी आप देखे जो है इज ऑलमोस्ट नॉट देयर, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं। सेपरेट आइलैंड जरूर है उनका अपना, बट इट इज नॉट बम्पिंग आउट एट ऑल। ग्लास इनकेसिंग जो हाउसेज ऑल थ्री लेंसेज इन द एलईडी फ्लैश लुक्स वेरी प्रीमियम। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आप इस फोन को आप कोई टेबल पे रखते हैं विद द स्क्रीन फेसिंग अप, ये वॉबलिंग नहीं करेगा जैसे बाकी सारे फोन्स करते हैं, बिकॉज ऑफ द वे मोटो हैज डिजाइन्ड द कैमरा बम्प। आई रियली रियली लाइक इट। नाउ एज 30 प्रो इज लिविंग अप टू इट्स नेम। एजेस जो हैं आर कर्व्ड वेरी वेरी नाइसली। हाँ, 8.5 mm thick है, but you know I'd rather go with 8.5 mm than have those ugly camera bumps. बहुत ergonomic phone है. Probably the reason they didn't name this the Moto Ergonomic 30 Pro is only because वो जो नाम है थोड़ा सा hard sell है, और maybe Motorola you could do it next time. Patent मेरा है। तो आपको याद है when all those specs were circling around me, editor साहब एक बार जरा फिर से उनका डांस शुरू करवाइए। तो ये आप देख रहे हैं, here they are. Let's talk about these numbers. कौन सा वाला नंबर you think should I start with? Usually I go with the biggest highlight of a phone, लेकिन इस फोन में आप देख रहे हैं कितने सारे highlights हैं। I can't really single out any one feature. तो किससे शुरू करें? Let's start off with the processor first. तो ये जो प्रोसेसर के स्पेक्स हैं, that's the reason this is a pro phone, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है इज द स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1। जी हाँ, प्रो लेवल, टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप चिपसेट फ्रॉम कोलकॉम। नथिंग बेटर्स दिस। यह है सुपर मलाई ऑन द दूध। इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर फोन जिसने लॉन्च किया लास्ट ईयर विद द स्नैपड्रैगन 888 जो फ्लैगशिप लेवल था, मोटो एज 30 प्रो इज अबाउट 20% फास्टर इन एवरीथिंग। सो इट इज फास्ट, it is super furious. Okay, back to the numbers, moving on to another big number. Okay, this is the 6.7-inch OLED panel. Big, 144 refresh rate, fast, HDR10 plus certified, gorgeous. तीनों qualities in a phone screen that you want, you get with the Edge 30 Pro. OLED है, HDR10 plus, बड़ा deadly combination होता है। चाचा चौधरी और साबू, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चाचा चौधरी का, और साबू की मसल पावर means together they are a formidable combination. Similarly, Edge 30 Pro का display is a formidable one also. OLED screen, HDR10 certification kills them all. Content on this, gaming on this looks really, really nice. You know where else you won't face any problems at all and kill it all? On Tech Magnified, जहाँ पे मैं आपकी सारी problems solve करता हूँ. So just hit that red subscribe button and enjoy everything I do. Now back to the Moto Edge 30 Pro. Let's talk about the battery. Big phone, remember, thankfully बड़ी बैटरी भी है. 4800 mAh बैटरी कैपेसिटी है इस फोन के अंदर. अब आपको लगेगा कि this is not like a power bank in any which way disguised as a phone, but actually it is. इसमें capability है of even reverse wireless charging. And during our testing, we
managed to actually get 2 whole days of usage with the phone, okay, because of the processor, because of everything else, I think is great. और हम लोग ने सब कुछ किया. I mean, we played games, used the navigation app, ordered food, took photos and videos and a whole lot more. और 2 दिन चला ये फोन. और जब टाइम आया to charge it, we had no issue at all because 68 watt power adapter जो है actually comes in the box. More than 50% charge in about 15 minutes, absolute breeze. हमारा quick 5-minute plug-in test जो है from our side, this is what we got. अब चलते हैं towards the camera. Design of the camera, I've already talked to you about it. I love it. I think more phone companies should try and do this. वो इतने मोटे-मोटे भी जो कर देते हैं, I think they are useless. Now let's talk about the performance. Let me show you what I mean. This was a good performing phone. 50 megapixel main camera है, another 50 megapixel ultra wide sensor है that doubles up as a macro camera also. 2 megapixel depth sensor है. Now these numbers really sound great on paper. Results क्या है हमारे? Well, the photos actually look even better. Primary camera actually let in a lot of light in our shots. मैं काफी worried था about oversaturation in the shots, but no, the colors actually looked color corrected and very, very clean. Moto ने I think अपना overall algorithm has, they've reworked that entire camera thing. Autofocus in the H30 Pro is amazing, really captures all the edges in the photo. लेकिन ultra wide की आप performance देखिए, this is where it really shines also. Very nicely done. Large sensor photos have a lot of detail in them और कोई भी problem nahi aaye at the edges or even in the middle. Now, if you want to become the best vlogger on earth, what do? Step 1, buy the Moto Edge 30 Pro because the Edge 30 Pro has something no other phone has. Step 2, flip the phone to the front and take a look at the selfie camera. 60 megapixel front camera. 60. Highest resolution selfie camera on any smartphone I think in the world right now. Cheeky little world first for Motorola, right? Selfie जो हम लोग ने दी, it came out really well. Front से जो हम लोग ने कैमरा यूज किया किसी भी चीज के लिए, it came out very well. Video and video calls were fantastic. Now every day you don't get a phone with 60 megapixel selfie camera, right? लेकिन उन्होंने कुछ और भी ऐड किया उन्होंने. Camera experience में dual camera video भी है. तो high resolution lenses are now on both sides of the phone. Really a great way to capture good video in the best way. Take a look at what we shot with the dual camera. अच्छा, अब चलते हैं towards the software experience. आपको ये तो पता ही है, Motorola software needs no introduction. Near stock Android है, ships with Android 12 out of the box. This is what I like from a smartphone in 2022. तो आपको मैंने दिखा दिया, Edge 30 Pro has all these crazy specs that मैंने आपको दिखा दिया, but it has something else also, the Moto experience. तो clean software मैंने आपको बता दिया, business grade security है with Think Shield, 5G enabled chip है with 13 bands supported, again very important, future ready है, and some incredible offers that brings the price also way down. So अगर आप सोच रहे थे about buying any other flagship phone right now, I would advise you to take a breather. Stop, sit down, watch this video again, then do a comparison and then spend the money on the right phone with the right specs at the right price. But wait, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा काम है ये, I'm going to do a shootout between the Moto Edge 30 and 2 more phones at the same price point. That will make your decision much easier. And how will you know कि वो वीडियो कब आएगा बाहर? Well, subscribe and press the notification button, क्योंकि ये जो subscribe button है, notification button है, ये अपने आप तो press होगा नहीं. Hit it and solve all your tech problems with Tech Magnified.